Hi, welcome back to my channel. I'm Siddharth Ghosh, and as you all know that I've been teaching here in YouTube since the ending month of April, right? So I'm teaching for class 6 till 10. I'm teaching all subjects except maths, and for class 12, I have started geography and teaching English and psychology for class 11th and 12th. So for now, we're going to start with class 10 physics, that is the human eye and the colorful world. So in today's class, I will be teaching refraction through glass prism. So I'm not taking myopia, hypermetropia part right now. I'll take it at last, not right now, because we'll do the theory part. It is easier, right? It is easier to understand, right? We'll start with refraction through glass prism. So रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म प्रिज्म देखो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म हमें समझना है क्या है हमें लाइक ये इस स्लाइड में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ जो ट्राइंगल है व्हाट इज इट दैट इज अ ग्लास प्रिज्म इसके अंदर एक वाइट बीम ऑफ लाइट ऐसे पास करती है और 7 कलर्स ऑफ फॉर्म दैट इज विबग्योर राइट तो हमें पता है विबग्योर तो प्रिज्म हम पढ़ते हैं तो वही हम इस पे पढ़ने वाले कि what happens when refraction through glass what happens when the white beam of light passes through a glass prism. So we'll first understand prism. So prism, it is a pyramidal piece of glass with two triangular bases and three rectangular lateral surfaces. तो क्या बोलता है प्रिज्म क्या है एक पिरामिडल पीस ऑफ ग्लास से बना हुआ टू ट्रायंगुलर बेसिस एंड रेक्टेंगुलर लैटरल सर्फेसेस है इसमें so angle of prism the angle between two adjoining lateral surfaces refraction through a glass prism okay तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है एंगल बिटवीन टू एडजॉइनिंग लैटरल सर्फेसेस दोनों लैटरल एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म व्हिच हैपेंस रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म जो हम अभी इसमें पढ़ने वाले हैं तो ये हम देखेंगे दिस इज योर ग्लास प्रिज्म ठीक है इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म बने हुए हैं तो पीई देखो इसमें मतलब आपको विद फिगर्स दिए हुए हैं तो पीई इज योर इंसिडेंट रे आपकी बुक में भी है आप इसको देख सकते हैं राइट पीई दिस इज इंसिडेंट रे मतलब ये रे आ रही है और एफ ई एफ इज योर रिफ्रैक्टेड रे ओके दिस इज योर ई एफ एफ यहाँ है राइट तो दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे एफ एस जो एफ ये वाला बना है दिस इज योर एमर्जेंट रे ठीक है तो ये आपके दिए हुए एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंस है ना एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिविएशन एंड एंगल ए भी बना हुआ है विच इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म ठीक है तो हमें पता है हमने देख लिया क्या है मतलब ये डायग्राम देख लो आपके बुक में भी ऐसे दिए हुए हैं लैटरल सर्फेसेस के थ्रू मतलब जो एंगल ऑफ प्रिज्म दिख रहा है इसमें कि लैटरल सर्फेस के थ्रू भी जा रहे हैं एंड दीज आर योर टर्म्स तो आप बुक में भी देख सकते हैं आपकी बुक में क्लास 10 की बुक में भी है तो देख सकते हैं so let's study angle of deviation it is the angle between incident ray and the emergent ray angle मतलब बनता है angle I is equal to angle E के बीच ई नहीं होगा आई एम सो सॉरी एंगल आई और एंगल ई जो है इनके एंगल जो बनाता है दैट इज योर एंगल ऑफ डिविएशन ठीक है व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू ग्लास प्रिज्म it splits into 7 constant colors which forms a bond of 7 colors दिस वन कॉल्ड डिस्पर्शन एक वाइट लाइट पास हो रही है जिससे ग्लास थ्रू ग्लास प्रिज्म तो उसमें 7 कलर्स निकल रहे विच इज योर विबग्योर सॉरी विबग्योर हमें पता है विबग्योर के कलर्स क्या है राइट तो वही निकल रहे विच इज कॉल्ड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्शन spectrum. The band of 7 colors into dispersion of white light is called spectrum. ठीक है बैंड ऑफ 7 colors ये पूरे 7 कलर का जो है बैंड है उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं और इन्होंने एक्रोनिम भी दिया विबग्योर ठीक है तो हमें पता है राइट हमें पता चल गया कि एंगल ऑफ डेविएशन और द डिस्पर्शन क्या होता है हमें इतना पता चल गया राइट तो हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं
Angle of deviation is not inversely proportional to 1 upon wavelength. This is your formula. That is the least deviated color as it has the largest, longest wavelength. तो रेड क्या है लीस्ट डेविएटेड मतलब बिकॉज वेवलेंथ जो है वो बहुत बड़ी है दैट इज व्हाई इट इज लीस्ट डेविएटेड वायलेट इज द मोस्ट क्योंकि वो उसकी वेवलेंथ इतनी कम है जितना वेवलेंथ का ज्यादा होगा उसका डेविएशन कम होगा बट जिसका कम है वेवलेंथ उसका ज्यादा डेविएशन इज द मोस्ट डेविएटेड तो वायलेट इज द मोस्ट डेविएटेड का ये देखो वायलेट तो यहाँ है तो इट इज मोस्ट डेविएटेड ऊपर आ रहा है आपका रेड है ना so that is least deviated. Isaac Newton was the first person who proved that sunlight is made up of 7 colors. आइजैक न्यूटन जिन्होंने लॉज ऑफ न्यूटन दिए थे राइट वो एक फर्स्ट इंसान थे जो बोल रहे थे सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स हमारा सनलाइट है वो 7 कलर से तो बना है पास सनलाइट थ्रू ग्लास में कन्फर्म बैंड ऑफ 7 कलर्स तो उन्होंने प्रूफ किया जो हमारा सनलाइट जो आता है इट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स जो विबग्योर का है he tried to split the colors further by putting another prism ahead of the prism forming spectrum but he failed to obtain more colors so he tried to split the colors मतलब उन्होंने कलर स्प्लिट करना शुरू किया मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी दिखाऊंगा कैसे राइट so but he failed to obtain more colors ठीक है failed he formed a spectrum from sunlight and placed an identical but inverted prism in front of the prism फॉर्मिंग द स्पेक्ट्रम मतलब एक सीधा मतलब ग्लास प्रिज्म रखा और एक उल्टा ऑल द सेवन combined by the inverted prism and energy and emergency not emergency I'm so sorry emergent तो ये आपको डायग्राम दिख रहा है एंड आई एम सो सॉरी फॉर द मिस्टेक्स गाइस आई एम रियली रियली सॉरी इट विल नॉट हैपन इन द फ्यूचर आई टेक केयर as you know in future in more future videos I'll take care of those mistakes which I'm making. I'm so sorry, please bear with me for right now, but I promise that I won't do uh, these things in future. तो उन्होंने एक स्पेक्ट्रम लिया वाइट लाइट लिया फिर उन्होंने स्प्लिट करके देखो ऐसा उन्होंने यहाँ दिखाया हुआ है और उन्होंने एक उल्टा भी लिया तो इसमें जा रहे हैं जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है और क्या हो रहा है यहाँ से आके यहाँ से मिल गए और नेट प्राइम व्हाइट लाइट अगेन तो व्हाइट लाइट फिर से बना दी राइट स्क्रीन तो मैंने भी बनाया है बट यू कैन सी हियर आल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट राइट तो हमने देख लिया कि आइजैक न्यूटन ने कौन सा क्या ही आल्सो प्रूव दैट सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स conditions necessary for internal reflection. Light should enter obliquely from a denser to a rarer medium. Denser से एक rarer medium जानी चाहिए light. Light. The angle of it should exceed critical angle. The light reflects in the denser medium. Critical angle, the angle of incidence for which angle is of reaction is 90 degree. The angle of reaction जो है वो 90 degree मतलब which is your critical angle. ठीक है? So in the next class, well, in the next video, I'll tell you what is a rainbow. Well, a rainbow you guys know, but like science ke term mein, what is the definition? What are the phenomena are there? So in the next class, we'll study about this. So Abhi ke liye, thank you guys, and I'm so sorry for the mistakes I made in this lecture right now. I'm so super sorry. I don't know what to say. I'm really sorry for those minor mistakes I should be making. But in the future videos, you won't see these mistakes like in other videos, right? So thank you guys. I hope you guys like it. Please subscribe to my channel and do like and please do comment also on my videos so that if you want me to improve on something I'll surely improve on that and you guys have any doubt you can also comment that. Thank you.